Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. And today I am going to complete the topic of plastids. So let's move to the classboard. So we were discussing plastids. And in plastids, we were discussing chloroplast. The green pigment. Clear? So under electron microscope structure we were discussing in the last lecture. Under electron microscope, the chloroplast have three main components. That were number one, the envelope, which we called and discussed in the previous lecture. It consists of inner and outer membrane. Clear? Number two, the stroma. So in the previous lecture, we have discussed stroma regarding the functions. The stroma, it is the fluid around thylakoids. Number one. Number two, it covers most of the volume of chloroplast. मीन्स कि ज़्यादातर हिस्सा जो है अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखें तो उसमें ये लिक्विड मौजूद है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं. एंड एज फार एज इट्स कंपोजिशन इज कंसर्न्ड, it consists of some proteins and ribosomes and small circular DNA. Clear? Small circular DNA. As it has ribosomes, some proteins are synthesized in stroma because of ribosomes and or functions to convert carbon dioxide or reduce carbon dioxide into sugars. Clear? And it is
a self-replicating organelle because of presence of small circular DNA। क्लियर? तो इससे प्रीवियसली हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए मौजूद है, उसके अंदर भी राइबोसोम्स मौजूद हैं। इसी तरह से इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनए में रखना है, इसके अंदर स्मॉल सर्कुलर डीएनए है। क्लियर? जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने सर्कुलर डीएनए की बात नहीं की थी, जस्ट डीएनए की बात की थी। एंड द स्ट्रोमा इन्वॉल्व्ड in dark reactions of photosynthesis. Clear? Now, the third part, that is the thylakoids. So, in the previous lecture, we have discussed the function of thylakoids. So, what are thylakoids? These are flattened vesicles having chlorophyll embedded on the membrane. Clear? And dear students, there is a structure called granum, and its plural form is grana. So, granum, what is granum? The thylakoids are in the form of stacks or piles at least 50 or 50 plus thylakoids are arranged to form granum. Okay? To form granum. Its plural is grana. And these are arranged so giving green color। जो thylakoids होते हैं ये इस तरह से अरेंज होते हैं, ये ग्रेना की शक्ल में। इट गिव्स द green color। And there is another structure, intergranum, it is the non-green part or branches which are used to interconnect grana। Clear?
which are used to interconnect grana. They are called as intergranum. Now, one thing more. They are involved in capturing, means the thylakoids. They are involved in capturing sunlight and converting solar energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH, adenosine triphosphate and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Now its diagram. Which is very, very important. If this question comes as a long question, so you must have to draw its diagram. So follow me how I am drawing this, so you can also learn how to draw the diagram. So the first membrane, now the second one, so I am going to fill in order to differentiate the layers. So this is how you have to draw it. It's not a hard job. You can do it easily as I am doing. As you know, in biology, the diagrams are very important part. Now the second layer. In board exams or in the class tests, you can only use the blue marker and the blue pen, ink pen usually, to make the contrast or shades. Okay? So that will be going to make a beautiful diagram.
अगर आप इसमें ब्लू मार्कर और ब्लू इंक पेन के जो शेड्स हैं उसमें इसको ड्रॉ करेंगे, पहले आप लेड पेंसिल से ड्रॉ करें, उसके बाद उसके ऊपर जो है आप मार्कर से उसकी बाउंड्रीज को मार्क कर लें, उसी को ऊपर ट्रेस करें। सो इस तरह से आपकी डायग्राम जो है वो बन जाएगी। क्योंकि बायोलॉजी में डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो डायग्राम्स हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और क्योंकि डायग्राम से ही ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, और दे हैव गॉट ऑल्सो वेटेज ऑफ मार्क्स, ये इनके मार्क्स में जो हैं ये शामिल हैं इन द बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। So these are grana, which I am drawing over here. Clear? Over here, and these grana are interconnected with the help of non-green parts, and these non-green parts are called intergranum. So this is how they are interconnected. So this one. So this is the structure of chloroplast. Now I'm going to label it finally. So this is the outer membrane. And this one is the inner membrane. Both of them, they collectively make the envelope, the first part, clear? This one. Now, this one is called thylakoid, clear? And this whole stack is called granum, clear? And these are intergranum, and here is circular DNA along with some ribosomes. This is small circular DNA, and these are ribosomes
तो ये सेकंड ऑर्गेनेल है जो हम पढ़ रहे हैं जिसके पास अपना डीएनए मौजूद है. द फर्स्ट वाज द माइटोकॉन्ड्रिया, द सेकंड वाज द क्लोरोप्लास्ट और द प्लास्टिड्स. क्लियर? So this is the structure of chloroplast. Clear? Hopefully आपको clarify हो गया होगा. और अब लास्ट में बात करेंगे the second type of plastid, that is chromoplast. So नाम से जाहिर है क्रोम का मतलब होता है कलर. और these plastids impart color to the plant petals of flower and ripened fruit. ripened fruit का मतलब पका हुआ फल. पके हुए फल का मुख्तलिफ रंग होता है, जैसे एप्पल इज रेड, मैंगो इज येलो, बनाना इज येलो. क्लियर? सो इस तरह से जो ripened fruit का जो कलर होता है या फिर जो पेटल्स होते हैं, जो फूल की पत्तियां होती हैं, द सेकंड वर्ल दैट इज कॉल्ड एज द कोरोला. सो उनका जो कलर होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट impart the color to the plants, to the flower, other than green. Green के अलावा जो कोई भी कलर होगा that is due to the chromoplast. And it helps, means the chromoplast, in pollination by insects and dispersal of seeds. Clear? So pollination में भी हेल्प कर रहे होते हैं इस प्लांट्स में. पॉलन ग्रेन का जो स्टिग्मा होता है फीमेल पार्ट का, उसके ऊपर उसको लैंड करवाना. सो जो ड्यू टू देयर ब्राइट कलर्स, ये ब्राइट कलर के होते हैं तो इससे अट्रैक्ट होकर आते हैं द इंसेक्ट्स. क्लियर? तो वो जब आकर वहाँ पर नेक्टर चूसने के लिए आकर बैठते हैं तो उनके लेग्स के साथ उनके जो पर होते हैं, विंग्स, उनके साथ अटैच हो जाते हैं. व्हेन दे लैंड ऑन द अदर वन, सो दे सम ऑफ देम द पोलन्स आर ड्रॉप्ड. एंड द थर्ड type is the leucoplast. Leuco means colorless. Clear? So these are colorless. Leuco का मतलब जैसे leukocytes, the colorless plastids and are tubular or triangular or of some other shape, but mostly tubular or triangular, and are present in underground parts of a plant like the roots. Clear? Like the roots. तो वहाँ पर ये मौजूद होते हैं. And its function is to store food. Clear? Food को store करते हैं and that is usually starch or oils. Clear? So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.